I'm ready to discuss about initiation number 1. That is for all. You can discuss this to anyone. In this, there is no deep precaution for anything. It is very easygoing and meant for all. Yeah, live. Everyone's live. You should know that 1 Arab 46 crore population of India, I have to give initiation to all. Even little bit practice will help. Swadharmam alpasya trayate mahato bhayat. Message of Mahatar Babaji to Lahiri Mahasaya. Mahatar Babaji was very strict to Lahiri Mahasaya. You are trying to test him. That give initiation to those who are ready to sell their whole property and donate to you. And he said, Gurudev, I will find no one. There will not be the person who will be observing this discipline. Okay, all right. Then you can select if you are having deep interest in that. Okay, all right. Then Mahatar Baba thought he may be too strict discipline and will be hard for all. Then he said, remember this, Swapamasya dharmasya trayate mahato bhayat. If a little bit practice will help. It means be liberal, give to all. The first initiation what I am giving you, it is with the permission of my Gurudev. I do not dare to serve anything without his permission. Nothing belongs to me without it is approved by him. It is what is the proof approved by him, it will have full effect when you practice. He will never say there is no effect. This is the important things. The first initiation is associated with Mahatma Gandhi's practice. What he was practicing from his childhood unknowingly. What was practiced by Paramahamsa Yogananda unknowingly. That is called the first initiation. Many things you may be practicing, you may not be knowing. Something we do not know, it is happening within. What is that? आप इसको याद रखिए, कोई भी चीज जो हम बताते हैं ये हमारी नहीं है और हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसकी पब्लिसिटी हो. आदमी पब्लिसिटी तब चाहता है जब अपना नाम कमाना चाहे. अपने नाम के लिए कभी मैंने एडवर्टीजमेंट नहीं किया, न किसी को करने दिया. क्योंकि जो कुछ हम बताते हैं याद रखिए, इस सब गुरुदेव की कृपा है. तो जो पहली दीक्षा हम आपको देना चाहते हैं, जो महात्मा गांधी बचपन से कर रहे थे उनको पता नहीं था. जिस दीक्षा वाली क्रिया को परमहंस योगानंद बचपन से कर रहे थे उनको पता नहीं था. बाद में उनके पिताजी और उनके संस्कृत अध्यापक ने फिर से दिया, उसी के विधिवत फिर स्वामी तेसरगिरी ने दिया. तो पहला इनिशिएशन है क्या? पहले इनिशिएशन में पहला पॉइंट है, हम चुपचाप बैठ जाएं. या तो किसी तखत पर जो बैठ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, ऐसी चीज पर बैठे जो कुचालक हो, जिस पर इलेक्ट्रिसिटी का करंट प्रवाहित न हो, जैसे लकड़ी है या कंबल है, ऊनी कंबल जिस पर इलेक्ट्रिसिटी का करंट पास नहीं होता है, उस पर बैठे हैं. और हमारा फेस, चेहरा पूरब की तरफ हो या उत्तर की तरफ, सिर ऊपर रीढ़ नीचे, ठुड्डी जमीन के समानांतर, दोनों कंधा थोड़ा पीछे की ओर,
दोनों कंधों के बीच में दूरी 180 डिग्री के लगभग, और सिर से पैर की उंगली तक स्वीकार करें कि हार मांस नहीं है, साक्षात परब्रह्म में स्वयं प्रकट हो रहे हैं। तो इसके अंदर के जो सारे परिवर्तन है वो भी परब्रह्म का ही अस्तित्व है, उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसको याद रखिएगा, ये है महत्वपूर्ण। तो सिर से लेके पैर की उंगली तक जो कुछ भी है ये परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। समझ में आए या ना आए तब भी हमारी आदत पड़ चुकी है, समझ में ना आए तब भी अगर ऐसा लगता है कि उपयोगी है हम स्वीकार करते हैं। जैसे प्रकाश क्या है पता नहीं है, लेकिन उपयोगी है, इसके माध्यम से हम देखते हैं। आसमान क्या है, उपयोगी है, आसमान ना हो तो हम कहाँ चलेंगे, कैसे बैठेंगे। हवा उपयोगी है, पानी ये सब चीज उपयोगी है, पेड़ पौधे ये सब उपयोगी है। जिसके बिना काम नहीं चलता है वो तो उपयोगी है। ये सिद्धांत कि सिर से लेके पैर की उंगली तक परब्रह्म इस रूप में सुशोभित हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ी शक्ति है। ये सद्भावना है। सद्भावना का अर्थ है सच्ची भावना, ये सद्विचार है, सच्चा विचार, यही जिसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, सच्ची धारणा है। हमारा सद्विचार, सच्ची भावना और सच्ची धारणा तीनों एक हो गया है, इसी को संयम कहते हैं। तो सिर से पैर की उंगली तक परब्रह्म इस रूप में प्रकाशित है, ये मान लेना ही संयमित जीवन है। इसको याद कर लीजिए, पहली चीज यही है। Try to remember first point of the first initiation is this. We have to accept a head to toes. Try to keep it in some specific position, like angle between shoulder joint should be around 180 degree. Both shoulder joints should be little back. Abdominal content should be towards back and towards a thoracic cavity. Chin parallel to the ground, head up, spine below. The right palm, left palm at the junction of thigh and abdomen are in the lap on each other. And head to toes, you have to accept it is presence of Parabrahma. This should be true idea behind this unique structure head to toes. This is true thought. This is true concept. When idea, thought, concept become one, that is called the most balanced life. That is called samyak position. That is called sanyamit, sanyam. This is called the perfect thing in our life. Then our idea, our thought and concept all are one at present. The head to toe is what we feel is a unique presence of Parabrahma. You should sit in comfortable position. If you are not able to sit in cross-leg or in lotus posture or siddhasana, take chair. You will have equal effect in chair also. But when you sit chair, make sure you should be fully aware. Sometime during practice, we feel some stage that is called sleep mode, but that is not sleep. Called spiritual drowsy mode. In that we start nodding. The chances of falling down. When you sit in a chair, have awareness that you will not fall down. But when you sit in lotus posture, there is no chance of falling down, it will prevent. There is no chance of falling back, it will prevent. You cannot fall right side or left side.
At least this posture is very conducive for the practice. But do not able to practice, this doesn't matter. Sit in the chair, try to make comfortable to sit, just like you sit in the car. What you have, you apply some protection. Try to manage, try to adapt your own style of protection, whatever you can. You see Mahatma Gandhi, when he was practicing Kriya Yoga, sometimes it starts happening very deep and automatically. Then he was becoming unconscious, falling down, eyes turned up, body become cold, like dead body, absence of pulse rate, profuse sweating. After a few minutes, he was awake. Therefore, you should not have any kind of fear. But it is not going to happen easily. It takes time. When you try to find, it may happen. Your body become very cold, touching very cold, like chilled ice, something, after profuse sweating, and you have yawning repeatedly. Many things are happening, and immediately you can contact me, you can call me. Then I will tell you how to process it. The first technique is this position. In this position, try to locate head and spine. You know the spinning wheel in the board. In head, there is always a spinning consciousness. Life force is moving. It's moving in both ways, clockwise, anti-clockwise. When you close your eyes, whatever you see, various radiations in the space in front of forehead, try to remember that radiation with open eyes. Remember that picture, that color of the radiation. It may be black, blue, yellow, whatever. Do not have preference. It will keep on changing. But that radiation is rotating in the head all the time. At the same time, it is going down up to Muladhara and coming up. This you can visualize whenever, all the time you can visualize. It will help you a lot. Visualization of revolving activity or rotational activity of spiritual rays, which we observe when eyes are closed. Sometimes with the open eyes, we observe it. Same thing is just moving in his spine. Both are happening same time. But our attention, concentration, awareness of mind will be more at the forehead point. They call the first initiation. You can practice any time. You can tell this to anyone and it will help. Whatever work you are doing, you are helping plants, you are helping your dog or cat, you are helping animal. But remember, if you are dedicated person for this Kriya Yoga spiritual movement, cat and dog always, they disturb this movement. Therefore, we should try to avoid it, to have pet in the home. Then you cannot practice effectively. You can donate your pet to anyone. You will find many persons. And this is the important point. You can practice it all the time. When you will have effort of visualizing this activity, one day you will find very easily you can visualize it. And very easily you can visualize it, then you are ready for the next initiation. Then within this area, within head and spine, there are many knowledge center,
energy center, center of consciousness, which are named Muladhar, Swadhisthana, Manipur, Anahad, Vishuddhi, Agnya, Sahasrar, the various names. But very important is from Muladhar up to the medulla. The medulla is called Agya Chakra. This is called the place of Kutas, place of perfect love for all. They call the place of knowledge of creation of anything, place of Brahma consciousness, place of Vishnu consciousness, place of Shiva consciousness. So this is called the heart center. This is called center of respiration, center of everything. And from here to Muladhara, there is a very important point. You see, in the spinning wheel, it is one parallel diagram is put inside head and spine. Behind, you see here medulla, that one is spinning wheel, one is the down. In between there are many energy, knowledge, peace, joy centers. This is important point. And here, inside, something which is very big, but we have to concentrate from Bhumad. You see, from Bhumad to here and to down. By repeated practice, automatically we are magnetizing brain spinal cord. That magnetic radiations, automatically it is transferred to Sahasrara chakra. Automatically. You need not to try it. As you practice more and more, the consciousness means quantity of peace, joy, power, knowledge. What is surplus, we do not need it. It gets stored in this Sahasrara chakra. This you can all the time visualize it. Bhumad, medulla area, Agnya chakra, then below Muladhar. Between Muladhar to medulla, then Bhumad. In head, there is a revolution, there is a rotation of the radiations which we see in the space in front of forehead when eyes are closed. Sometimes with deep concentration, then you see all those things with the open eyes also. Same thing is revolving, rotating inside the spine. This is the first thing all should practice. I am going to explain this in the Zoom session. Mahatma Gandhi was experiencing this from childhood. Therefore, he discovered that all persons should have a spinning wheel. Because when we have a spinning wheel, what happens? The same rotation of consciousness which is inside the head, we make externally something and we try to rotate it. And the spine is here. We try to rotate it at the same time. We are having thread here. Both we are doing same time. By doing this repeatedly, peace is generated. As you do the spiritual beads, you have 108 or something more or whatever, keep on taking each beads and chanting Om, Amin, Amin, or Ram, Krishna, Jesus, or Christ, or anything, Buddha, or Ladi Mahasaya, Tishwagiri, Paramahansa Yogananda, or God, whatever, it helps. But that will help more. Because that practicing externally beads, that is less powerful than practicing this spinning wheel, this visualization, and along with that working also, making threads. Therefore, there was big movement because of this spinning wheel. Therefore, when Paramahansa Yogananda came to Vardha, because Swami Shree gave him message, he should give initiation
to Mahatma Gandhi because he is seeking it, he wants it. But you are thinking that Mahatma Gandhi is so big height, he is called father of nation. He may not be interested, but when he went, then he asked, he requested that Paramahansa Yogananda got surprised that he is interested in the Kriyayoga Initiation. The afternoon brought me an opportunity for a chat with Gandhiji's noted disciple, daughter of an English Admiral, Miss Madeline Slade, now called Miraben. Her strong, calm face lit with enthusiasm as she told me in flawless Hindi of her daily activities. What are daily activities? Getting up at 5, going to the villages, serving all people. And after that, during conversation, she realized she was very happy when Americans are coming and having interest in spirituality. And meanwhile, what happens? Mrs. Miraban's hands were soon busy in a spinning wheel. She starts working, talking with Yogananda. At the same time, she was just doing that activity, spinning wheel activity. Paramahansa Yogananda wrote this. It is in Sydney's of 1935. It means when you have to follow it, you have to think why a spinning wheel was observed and requested by Mahatma Gandhi to all Indians should follow it, because it brings peace inside. The same thing happening inside brain and spinal cord. Suppose in the heart, something happening like love, dub, that is sound we say. In the pulse it is happening. Try to feel body and tense, relax. You feel peace. Tense, relax. Tense, relax. Everywhere you'll find peace and joy. What is happening in this muscular structure which is named the heart? Try to repeat the same activity anywhere in the body part. Or take any tools outside. As your heart pumps, try to pump it and release it. Pump it, release it. You will find peace. What is happening in the brain and the spinal cord? Try to do it, visualize it, practice mentally. You will get peace. This is the first initiation. Many of you are doing, you are not doing it. At present, majority small so-called children, I don't call them children. They appear to be children, but they are not. Many things are happening in their brain and spinal cord. Now, I request all of you, keep on practicing this all the time. अब आपको दूसरा इनिशिएशन, सेकेंड इनिशिएशन और क्या अभ्यास कर सकते हैं? सिर से पैर के उंगली तक इसके अंदर जो नर्व्स के गुच्छेज है, प्लेक्सेज है, जैसे यहाँ पर सेरिब्रल प्लेक्सेज, उसका नाम दिया गया सहस्रार चक्र, भ्रूमध्य के पीछे मेडुला में मेडुलरली प्लेक्सेज, एक्सटर्नल नर्व्स इसके पीछे सर्वाइकल प्लेक्सेज, आपका चेस्ट है, स्टर्नम बोन है, इसका सेंटर, दोनों निपिल इसके एक लाइन से मिलाइए या स्टर्नम बोन के सेंटर में जाइए, इसके पीछे थोरेसिक प्लेक्सेज और नीचे आइए नावेल एरिया, इसके पीछे लंबर प्लेक्सेज और नीचे आइए प्यूबिक सिम्फाइसिस इज द बोन, behind that in spinal cord, sacral plexus, come downmost. You will find one more plexus. We call it Mooladhara. How to locate them? Inside the medulla you will find a small ditch. And try to see there will be a small ditch. A small ditch put here and put your hand like this. This area
will cover. They call the area of Agnya Chakra, area of Kutastha, area place of all knowledge of creation. There will be blueprint. What will be structure of head to toes? What will be the shape and size of eyes and nose and thing? All blueprint is here. That is map of this body structure. There you can change map. How to change map? By practicing Kriya Yoga, you can change blueprint. You can change your facial structure, what you need. Then below that, this is sternal notch. This is sternum bone. And here is the notch, a cavity. We call it fourth cavity also. But technically, you can call it sternal notch, sternum notch, sternal notch. Behind this, in spinal cord, there is a plexus, a bunch of nerves together. We call it cervical plexus. The center of the sternum bone go behind the spinal cord. That is called thoracic plexus. The navel area behind in the spinal cord, that is lumbar plexus. And go down, you will find just above the genital organs, there is a bone meeting together, that pubic symphysis. Behind that is spinal cord, sacral plexus, sacral, because that gives that we are sacred, we are pure. From that you will find we are very humble. And go further down, and there is a tailbone. Tailbone is curved. Where you are sitting, there is an anal orifice, from where we pass the stools, and above, there is urinary place. In between, there is perineum, center of that, go inside, visualize. Where it touches the inside the spine, that is called Mooladhara. Therefore, when you contract your anal area, when you contract your genital parts, just you are holding, suppose that you have to urinate, now there is no place, how to hold it. Think like that. But do not practice when you have to pass urine, you have not to hold, you have to pass it. So everything is empty. When to contract your reproductive system, this backward and upward, at the same time anal orifice, and in between there is area, try to visualize it and contract it towards up and back. It will give you the perception of Mooladhara. When you practice that, you will not have any kind of, which we call hemorrhoids, any kind of prostate problems, bladder problem, cervix problem, urethra problem, you will not have it. Therefore, you have to visualize, you have to sit and give some time to locate the position. When you locate it, try to touch it. For example, this is Sahasrara, touch it at the same time. Place concentration of mind in the space in front of forehead and watch breath. Come to the medullary area, touch it, feel it. Have full concentration at the medullary area at the same time. At the same time, locate Bhumadhya and observe the breath. Come down behind external notch. They call Vishuddhi Chakra. Try to locate it. At the same time, watch breath. Have attention, concentration on Bhumadhya. Then come to the Anahata Chakra. Have the same practice. Have deeper awareness, concentration on Bhumadhya in the space in front of forehead and observe the breath. And had visualization on this part where we call cervical plexus, Anahata Chakra. In the same way, go behind, inside abdomen, behind navel area, there is Manipura Chakra. While concentrating on Manipura Chakra, try to locate Bhumadhya, observe the breath. Then next, come to the Swadhisthana Chakra, that is very important. Swadhisthana, Mooladhara together are very important. You try to little contract your anal area up and the pubic area little up and back. Try to see where the pubic symphysis
Pubic symphysis is the junction of the bone coming from the sides behind in his spine. There is a plexus we call sacral plexus. It gives sacred feeling that we are purest of pure. It gives a full control over all sense organs. Then Mooladhara, try to see the anal area and area, the point from where you pass urine, that area in between. There is just some area, center of that, go up. Then you will try to perceive Mooladhara. Try to visualize each and every center, knowledge center at the same time. Place concentration of mind on movement and watch breath. Accept this is the second initiation. Along with this, try to have journey. Try to have walking, mental walking from Mooladhara to medulla, Agnya Chakra to Bhumad. Mental walking, come to Bhumad, then go back. When you are coming up, going back, all the time, have awareness. Your one consciousness will stay here all the time. Other consciousness will walk. This is the next practice you can do whenever you want. And another practice, now placing your mind in Brahmarand, in Trikuti, in Sushumna Dwar. That is the next. That is Sushumna Dwar. It's called fourth heaven. That is Trikuti. That is Brahmarand. That you will find in holy signs. When you open procedure, Sutra number 7 to 10. After that, there is a diagram. No, not in this. In the first chapter, Gospel. First chapter, Gospel, Sutra 7 to 10. There is a diagram where Chitta, Buddhi, Manas, ego, this is called Maharloka. This is called Sushumna Dwar. This is called Trikuti. This is called Brahmarand. All having same meaning. How to go there? That's the important point. How to go there? You can go there and do not have attachment with the wisdom or mind, chitta or ego. How to go away from the attachment, aversion of the heart, of the chitta, of wisdom or mind. Ignore it. With the logic you cannot find truth. With the observation through the senses you cannot find truth. With the help of mind perception, wisdom activity, sense perception, what we accept it is illusion. Do not become affected from that. Somebody is calling foul name, somebody insulting very badly. Remain unaffected, that is Maya. Somebody praising, oh very good, you are praising me. Remain unaffected. Sense perception, with the phenomena of touch we feel, comfort, discomfort, ignore it. There is no comfort, there is no discomfort. What is heat season, summer of India, very hot. There is no hot and cold. It is winter so cold, there is no cold. But I feel heat and cold. But remember, it is image, illusion. Never become affected. You may be feeling hot, perspiring, all right, no problem. But this, I accept image, dream. So much cold. I have coat, woolen coat. All right, have woolen coat. But remember, there is no cold, there is no chilled. The same way hunger and thirst, they never exist. Happiness, lightness, they never exist. Pain, pleasure, they never exist.
remain unaffected from the hunger, from the thirst, from sense perception, hearing, touch, vision, taste, smell, what we perceive, remain unaffected. Because they are dream. Moment you remain affected, and directly you are entering into the fourth heaven, Maharloka. After that, very quickly you will go to Janaloka, where you will realize we are children of God. When day and night you are affected from the taste, from the sound, from the vision, from the smell, you are caught in the network of wisdom and mind and senses. Then you are not able to enter into Maharloka, into Sushumna Dwar, into Trikuti, into Brahmarand. Therefore, decide, maybe you can make this timetable. Today 1 hour, I am not going to become affected from anything. Heat or cold, hunger or thirst, taste, smell, any visual things. I am not going to accept them good or bad. 1 hour we can practice very easily. By practicing every day 1 hour, 1 hour, 1 hour, 1 hour. After a few months, you will be able to practice 2 hours. After 2-3 years, you will be able to practice 5-6 hours. After a few years of sincere this practice, one day you will realize you can practice 24 hours. Moment you are able to practice 24 hours, immediate the next initiation what we are going to get, you will be able to do very nicely. Now I am going to talk in Hindi. अच्छी तरह से याद रखिए, पहला इनिशिएशन तो ये महात्मा गांधी का चरखा, ये सिर स्पिनिंग व्हील, माथे के सामने जो देखते हैं, जो दिखाई पड़ता है, इस सिर के अंदर घूम रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वही चीज आपके स्पाइनल कॉर्ड में घूम रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ये विजुलाइज करना। और दूसरा, उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सहस्रार चक्र, मेडुला आज्ञा चक्र, विशुद्धि, अनहद, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार, उनको लोकेट करिए। कहाँ पर है सहस्रार चक्र, कहाँ पर है? भूमध्य से ऊपर उठिए, जहाँ बच्चों में हड्डियां नहीं होती, फिर बाद में हड्डियां जुड़ जाती, वहीं कुछ अनुमान करिए कि उसी के अंदर ब्रेन में सहस्रार चक्र है। इसका मतलब नहीं कि हड्डी न जुड़े तो अच्छा है, हड्डी जुड़ गई कि नहीं जुड़ी अच्छा है। किसी किसी लोगों को भ्रम होता है इनकी हड्डी नहीं जुड़ी, रियलाइज मास्टर ऐसा नहीं है, वहाँ हड्डी सबकी जुड़ती है। जिसकी हड्डी जुड़ी और खाली हो जाती है, इसका मतलब उसको बहुत हैवी डिफिशियंसी है विटामिन डी की, कैल्शियम की। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे एक आदमी मैंने देखा, क्या था, यहाँ छुआ तो एकदम गुलगुल था, एकदम जैसे बच्चों को होता है ना, ऐसे था। ये कौन है? महान ज्ञानी है। अच्छा महान ज्ञानी है तो हुआ क्या? अंत में एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में गए, मर गए। उनको पता नहीं था कि एक्सीडेंट होगा, पता नहीं था कि अस्पताल में जाएंगी। लेकिन शिष्य लोगों को भ्रम हो गया कि हमारे गुरु रियलाइज मास्टर, क्योंकि इनका सहस्रार चक्र गुलगुल था, ये ढीला था। ये सब चक्कर में मत पड़िए। जो परमहंस से योगानंद ने कहा है, जो होली साइंस वही पकड़िए, किसी और वार्तालाप में न फंसिए। इस चीज हमेशा याद रखिएगा। तो इसके सामने लगभग 10 अंगुल की जगह 4 ये इस जगह पर, इसलिए यहाँ पर मांग फाड़ी जाती है। यहाँ पे मांग इसलिए फाड़ते हैं कि हम यहाँ पर जब ध्यान आता है तो अपने आप पे शक्ति जो जनरेट करते हैं, शांति, ज्ञान, शक्ति, आनंद अपने आप शिफ्ट होकर यहाँ स्टोर होता रहता है। आवश्यकता पड़ने पर उसका इस्तेमाल होता है। फिर देखिए इसके नीचे जो मेडुला चक्र है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आज्ञा चक्र कहते हैं, कूटस्थ केंद्र कहते हैं। वो कहाँ है?
आप पीछे हाथ रखिए, एक छोटा सा गड्ढा दिखाई पड़ता है। उस गड्ढे पर ऐसे मुट्ठी रखिए कि एरिया पूरा है कूटस्थ का क्षेत्र, आज्ञा चक्र का क्षेत्र, वहीं पर पूरे शरीर की ब्लूप्रिंट है। कितनी लंबी नाक होगी, कितना लंबा कान होगा, कितने दांत होंगे, कितनी हड्डियां हैं, कितना क्या है, सब वहीं पर है। इसे उसको ब्रह्म केंद्र कहते हैं, नाभि केंद्र कहते हैं। वहीं पर जो एक मशीन है मस्कुलर जो पंप करती है खून, उसका सेंटर यहीं पर है, इसलिए इसको हार्ट सेंटर कहते हैं। जो हम श्वास लेते हैं इसका भी नियंत्रण वहीं से होता है। अरे पूरे सिस्टम का बहुत ढेर सारा नियंत्रण सब वहीं से होता है। तो ये है हमारा आज्ञा चक्र का स्थान, कूटस्थ का स्थान, उसको पता करिए कहाँ है। फिर विशुद्धि चक्र, ये जो है एक्सटर्नल नाच, एक्सटर्नम बोन है ये। यहाँ पर एक गड्ढा है, इसी एक्सटर्नम बोन से इसका नाम एक्सटर्नल नाच पड़ा है। हिंदी में कंठकूप भी कहते हैं। ये देखिए गड्ढा है, इसको कंठकूप कहते हैं। ठीक पीछे स्पाइनल कॉर्ड में विशुद्धि चक्र। अब सीने में आइए, स्टर्नम बोन है ये बीच में, यहाँ से पसलियां जुड़ी हैं। इसके सेंटर पर आइए, इसके पीछे स्पाइनल कॉर्ड में ये है अनाहत चक्र। फिर और नीचे आइए, जिसको परंपरागत से बेली बटन कहते हैं। इसका भूल से नाम नाभि केंद्र भी रखा गया है, लेकिन बेली बटन ज्यादा ठीक है, क्योंकि नाभि केंद्र तो ये है। इसके ठीक पीछे आइए स्पाइनल कॉर्ड में मणिपुर चक्र। और नीचे आइए, जब आप नीचे आइए ऐसे तो आपके जनन अंग के ठीक ऊपर दो हड्डियां आपस मिली है, प्यूबिक सिम्फाइसिस उसको कहते हैं। उसके ठीक पीछे स्पाइनल कॉर्ड में सैक्टल प्लेक्सस है। और उसको ठीक नीचे आइए, आपको एक टेल बोन मिलेगी। टेल बोन, उसको कैसे पता करें हमारा मूलाधार चक्र कहाँ है? जहाँ से मलद्वार है, फीसेस बाहर निकलते एनल एरिया, उसके ऊपर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जहाँ से यूरिन बाहर आती, उसके बीच के क्षेत्र को पेरिनियम कहते हैं। तो एनल और रिप्रोडक्टिव यूरिनरी पार्ट के बीच का क्षेत्र मिट्टी जगह होती, पेरिनियम है। इसके सेंटर की जब कॉन्ट्रैक्ट करते ऊपर की ओर, तो परसेप्शन मिलता मूलाधार चक्र का। इन एक एक चक्रों पर एकाग्र होकर के माथे के सामने जो दिखता है देखते रहिए, श्वास दर्शन करते रहिए। इन चक्रों के गुणों को याद रखिए। मूलाधार से अपने शरीर का जो भार है उसका नियंत्रण होता है। हड्डी मांसपेशियों का आकार, उसके ऊपर आइए। स्वाधिष्ठान चक्र से अपने अंदर कितना लिक्विड हो, कितना ब्लड हो, कितना लिम्फ हो, कितना जूसेज हो, उसका नियंत्रण होता है। उसके ऊपर आइए, मणिपुर चक्र से ये नियंत्रण होता है कि हम किस तरह का हम वाइब्रेशन पैदा करें, सब प्यूरिफाइड रहे। अग्नि तत्व का अर्थ जठर अग्नि यही नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। हम आपको पूरा नहीं बता रहे हैं, पूरा बताएं तो लगेगा 2-3 साल। फिर सीने के पीछे स्टर्नम बोन के सेंटर के पीछे आइए, अनाहत चक्र। उसका काम क्या है? उसका काम है हमारी सजगता बढ़ा देता है, अवेयरनेस बढ़ा देता है, टच परसेप्शन उसी का काम है देना। फिर है विशुद्ध चक्र, उससे सुनने की क्रिया। जब विशुद्ध चक्र व्यापक हो जाता है तो आंखों से भी सुनते हैं, हाथ से भी सुनते हैं, पैरों से भी सुनते हैं। उसके ऊपर आइए, जो मेडुला चक्र है, कूटस्थ है, वहां तो सभी चीजें एक साथ हैं। एक एक चक्रों पर एकाग्र होकर के माथे के सामने उसको देखते हुए, श्वास अनुभव करते हुए, सिर से पैर कमर तक परब्रह्म इस रूप में सुशोभित है। ये बार बार कहिए, थोड़ी देर बैठिए, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, जितना समय दीजिए, और इसको चाहे जब करिए। इस चीज को चाहे जब करिए आप। ये सब चीजें हमेशा करने के लिए। आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, खाना खाने के पहले कर सकते हैं, सोने के पहले, सोने के बाद,
कभी भी कर सकते हैं। आप खेत में काम कर रहे हो, पेड़ों की सेवा करते हो, जानवर की करते हो, मानव की करते हो, कुछ भी काम करते हो, हर समय कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कोई सावधानी नहीं है, लेकिन इफेक्ट बहुत है, प्रभाव बहुत है। करके देखिए कितना प्रभाव होता है। फिर अगली क्रिया है जिसको तभी कर पाएंगे जब इन सब क्रियाओं के एक्सपर्ट हो जाएंगे। जब तक इन सब के अभ्यास के एक्सपर्ट नहीं होगी, अगली क्रिया जो हम देंगे उसको बहुत अच्छी तरह से करने में आपको संतोष हो सकता है कम हो, लेकिन बनत बनत बन जाई। करते करते एक दिन वो भी अच्छा कर लेंगे। तभी दीक्षा की क्रिया हम आपको 3 चरणों में बताएंगे। एक आज हम रात्रि में बताएंगे हम, इसमें 5:30 है। तो आप आराम से जो बताऊं अभ्यास करिए, और अभ्यास करते करते फिर शाम की क्लास में केवल वह लोग रहेंगे। आप खाना पीना थोड़ा जल्दी खा लीजिएगा 7 बजे के आसपास, जिससे 9 साढ़े 9 तक 2.5 घंटा हो जाए। तो 9:30 से 12 बजे तक आपको वो वाली क्रिया देंगे उन लोगों को जिनकी कल ट्रेन है या फ्लाइट है, और रात्रि को वो 9:30 बजे यहाँ पर आ जाएंगे। 9:30 से 10:30, 11, 12 जितना टाइम होगा आप चिंता ना करिए। सोना जगना दोनों माया है। The next initiation, try to practice this what I have given you sincerely, before meal, after meal, during meal, whatever. The next initiation I am going to offer you 9:30 to 12 for those who have flight tomorrow morning or have booked a ticket tomorrow morning in the train or anywhere. I will sit with them from 9:30 onward. Onward means there is no fixed time, 9:30 to 12 or 11:30, whatever. But in that, I request all of you, only those will come who are ready to go. Others, practice this in your room. उस वाले क्लास में केवल वही आएंगे जिनको जाना है। बाकी सब अपने कमरे में अभ्यास करिए जो कुछ हमने कहा है। दिस इज फॉर नाउ। ये इस समय के लिए है। हम मिलेंगे आपसे 9:30 बजे। आई विल मीट यू 9:30 हियर। कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं फ्रीली। हमसे संकोच मत करिए, न डरिए। हम कड़ा जोर से बोलते इसलिए कि टाइम कम है हमारे पास। अब बादल चले, उसको कहना कि हम बरसेंगे, ताकि गरजता है पता चलता है अरे बादल आ गया है। वो गरजे ना, म्यू म्यू क्यों क्यों, वो बोले तो पता चलेगा बादल आ रहा है। गरजता है ना। तो स्वामी गिरी गरजते थे तो योगानंद लगता था अरे कुछ हमने भयंकर भूल किया है, इनको ठीक करना है। हम आपसे जो कभी तेजी बोलते हैं उसका कारण यह कि समय कम है हमारे पास। हम बैठ करके आपको आधा 1 घंटे तक धीरे धीरे समझाएं, ये संभव नहीं है। इसे हमारे जोर से बोलने पर आप डरिए मत, बस सजग हो जाइए। अगर कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। Anything you want to ask, you can come forward, you can ask me. If somebody is asking, then everybody continue your practice. Do not listen question.